Warm welcome, everyone. Before we begin our today's satsang, let's take a moment and sit in silence. Now, gently come back. So, today we have a very interesting topic which we all experience in everyday life. We often believe that I'm not happy because of others, and we often believe others cause our reactions. But is that really true? So, how do you deal with people who trigger you? Is today's topic. But before we go into this topic, the question comes, why do certain people trigger us while others don't? कुछ लोग आते होते हैं ऐसे जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके साथ जब बात होती है तो लगता है कि किसी ने छेड़ दिया है मुझे, कि कुछ हो गया उनको, उनको देख के कुछ हो गया, उनसे बात करते कुछ हो गया। और कुछ अंदर ऐसा होता है जो शांत बैठा होता है तो एकदम से कोई खड़ा हो जाता है उठ के, और लगता है कि बस क्या कर दे उसके साथ। So, एक ट्रिगर सा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे देश का बॉर्डर क्रॉस कर दिया हो, तो जैसे एक सैनिक तैनात हो जाता है हाथ में बंदूक लेके, तो उस तरीके से हम हो जाते हैं उस सिचुएशन में। और ये बहुत कॉमन इशू है। आई सीन सो मेनी पीपल जिनके साथ ये वाला इशू है, और वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं। देयर बॉडी मूवमेंट, देयर टोनैलिटी एंड एवरीथिंग becomes very different, and they behave in a funny way. So the question is, why do certain people trigger us while others don't? You may raise your hand and we can have a discussion. Namaste, everyone. Good evening. So, according to me, the very first thing that comes to my mind, why do certain people trigger me in particular, is they touch some part of my being, my internal being, which is intolerable, unacceptable, and which cannot be compromised. So, there are certain vibrations, even when they are not saying anything, their presence makes me feel very insecure, number one. Number two, you are correct. I get into defensive mode. I lock myself. It's like, touch me not.
stay away. And I seriously get into that attack mode, because if it's just the presence that makes me feel so uncomfortable, अगर सिर्फ प्रेजेंस मेरे को इतना अनकंफर्टेबल कर सकता है, तो उनका कुछ भी बोलना, मुझे कुछ भी बोलना मुझको इतना इरिटेट करता है, इट इरिटेट्स मी टू द कोर, टू द बोन्स, दैट आई कैन एक्चुअली, it is again fight or flight mode. Either I'll run away from that situation, or I'll start fighting with that person, and that fighting goes very aggressive, then it's do or die. Then there is no looking back. You're correct. It's like a soldier in the front line war, where I cannot accept defeat. It's not ego, it's not attitude, it's not false pride, it's self defense mechanism. And why do they trigger? There is some element in them that is not in alignment with our value system, ethics, integrity, with our personality, with our vibes. It is not about them being who they are. It's not their personality alone. It's in totality that they irritate us, irritate me. So that's my take on it. Thank you. Okay. Anyone else would like to share? Yes, Garima, you can speak. Hello, Pranam. Hello, everyone. I think certain people do trigger us or have the, because number one is we have given them the power to trigger us. Because anyone can behave the way they want, but if we have given the power of our reactions, if we don't have control to that, and we are getting angry or we are getting defensive over something, it is not only because of how the other person is behaving, it is also because we also lose control on ourselves during that time in that situation, and we lose our calm. So it is both ways, I would say. It is not just the other person, it is certain yeah, because sometimes for example, if something is important to me, like my own pride, my own thing, and somebody is attacking that pride, and then I'll have no, I have to fight and save, and I have to, so that is how I come into that mode. But if I can say no, it doesn't matter how the other person is talking or speaking, my pride is still intact. It is up to me how I am. So it is different situations, different things. Sometimes you do have to react, even if you and that is needed, that can be needed. Sometimes your reaction might not be needed at all. So it depends from situation to situation, but it is both ways, how much power we are giving to others. That's how I feel. Thank you. Okay. Yes, Dr. Rashmi, you can speak. Pranam Guruji. I was just thinking about like when do we get triggered? It is like as earlier speakers have said, like somebody, if somebody's really pinching you, like they will point out to some area which is your negative point or something like that. Then you are like a bit paying more attention to them rather than the routine talks or routine communication. So maybe some pain area, if they are making you realize it negatively, then you think about that negatively. Otherwise, you won't get triggered also. Many times that happens. Okay. नमस्ते गुरुजी। ये ट्रिगर जो करता है, कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ जैसे सेम चीज एक बंदा करता तो ट्रिगर नहीं होता है, एक बंदा करता तो ट्रिगर होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है। तो जैसे उस दिन मेरे बच्चे ने कुछ बोला तो मुझे इतना फील हुआ, किसी और ने बोला तो फील हुआ। तो इट मीन जो मेरे अंदर जो इमोशन है वो शायद
दूसरे पर डिपेंड नहीं है, मेरा ही कुछ थिंकिंग है। पर ऐसा क्यों होता है कि उसकी वजह से ट्रिगर होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब ऐसा, मतलब कि उसको कैसे ओवरकम करना है। मतलब ये तो फैक्ट है कि सेम चीज मैंने उस दिन देखा था, सेम चीज दोनों की है, तो एक में ट्रिगर हुआ, एक में नहीं हुआ, सेम चीज एग्जैक्टली। पर आपको बट क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक बोल रहा है तो नहीं हो रहा, और दूसरा बोल रहा है तो हो रहा है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब भी मुंह खोलते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ, राइट, ऐसा होता है। मतलब ये समझ नहीं आया ऐसा क्यों होता है। और फिर ऐसा होता है, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो रूम में होते हैं तो हम नहीं होते, पहले डिसाइड हाँ, कर लेते हैं कि अब जब ये होंगे तो हम नहीं होंगे। फिर मतलब फिर वो प्री कंसीव हो जाता है कि इनके होने से वो दिमाग वो होगा, तो इससे बेटर तो मतलब कि मन मतलब उस अशांत होगा। सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ, ये है। पर क्या लगता है, अगर इस पे अगर सोचोगे आप, हम्म। कुछ लोग क्यों ऐसे हो जाते हैं, मतलब जिनके साथ नहीं बैठ पाती हमारी? ये गुरु जी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। मतलब कई बार देखा है, जैसे ऑफिस में भी कईयों के साथ बैठता है। ऐसा नहीं कि वो हर काम मेरे लिए अच्छा करता है, पर कईयों के साथ बैठता है, कईयों के साथ नहीं बैठता है, मतलब कि एकदम ही वजह से। तो ये ठीक मुझे एक्चुअली। चलो ठीक है, आज इसी पे ही बात हो रही है, अच्छा आज समझ आ जाएगा। ठीक। हाँ। ओके। आपने एक बार बताया था कि जब भी किसी से मिलो ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हैं, और पास्ट का जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सब भूल के एकदम फ्रेश ओपन हार्ट से मिलो। तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, पर हमें लगता है कि जैसे जिन लोगों से हमारा हार्ट कनेक्शन होता है डीप, उनकी बातें हमें ट्रिगर नहीं करती ज्यादा। और जिन लोगों से पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं ठीक हुए, या आपके बिलीफ सिस्टम के कॉन्ट्रडिक्शन में हुए, आप कुछ बिलीव करते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसे बिहेव करना चाहिए, और वो वैसा नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो जजमेंट आ जाता है। पर हम जहाँ पे हार्ट कनेक्शन है, जहाँ पे प्रेम है, वहां पे ये कम ट्रिगर होता है। ओके। नाम आचार्य जी ने एवरीबडी। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हमें ट्रिगर करते हैं वो यूजुअली मैनिपुलेटिव होते हैं। दे आर नॉट व्हाट दे स्पीक, देयर वर्ड्स एंड एक्शंस डिफर, and even to the extent that their intentions matter much more than what they speak or do। क्योंकि एक स्टेज पे हमारी सोल इस स्टेज पे पहुंच जाती है कि हम वर्ड्स और एक्शंस दोनों से परे इंटेंशंस को वैल्यू करने लगते हैं, and we have that discernment to decide whether intentions are positive or negative। Then if somebody messes around with your value system, then I think you have all the right to get triggered, and then choice is yours whether you want to go in for defense mode or attack mode। There was a time initially, in initial years of my life or career, I used to get into attack mode. So I people know me like that. That Diksha is very assertive, and till date might be they remember that Diksha has been a very assertive person. But at a stage, I realized maybe around 38, 40 age, I realized कि ये इससे ना खुद का ही सर दर्द होता है. So it is better to go in defense mode, or get silenced about things at times, because when you observe that the other person is not going to change at all, and that is his or her value system or belief system, whether he can consistently lie, steal, be unethical about things। और फिर मैं एक स्टेज पे पहुंची कि okay, you don't have to make consistent effort in lowering my self esteem, you do you, I do me with such people। और अब शायद मैं उस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, प्लीज वॉक इन योर ओन लेन and let's drive our own vehicles carefully। So, initially I was very naive, very simple, but I've seen quite a lot in my life. And at this stage of life, I think I can read intentions, which may be, 80% of the times that might be right, 20% of the times that might even go wrong even today, because I still have life left and a lot of learning is still left. But this is how it goes. Yes, people trigger, their energies tell you the kind of people they are।
All right. So we all have different ideas about how others behave, sometimes intention, sometimes we don't even know why there is a trigger, so on and so forth. But now the question comes, what inside us reacts so strongly when someone is creating a trigger within me? Then what inside me reacts so strongly? And is the trigger actually pointing towards something unresolved within? Is this something related to me, or is it something related to the person who's trying to create a trigger in me? Think on this and then share. Because what I've seen is sometimes a trigger is not the problem, it is the information. So, what inside us reacts so strongly? And is the trigger actually pointing towards something unresolved within me? कुछ ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रांगली हम रिएक्ट करने लगते हैं, तो क्या ऐसी घटना होती है हमारे अंदर जो हमें मजबूर कर देती है, बाधित कर देती है एक स्ट्रांग रिएक्शन देने के लिए, एक उत्तेजित, एक उत्तेजना सी पैदा हो जाती है भीतर? और क्या ये जो दूसरे का व्यवहार है, दूसरे का जो ये ट्रिगर करने का जो एक्ट है, क्या ये इस दिशा में हमें जाने के लिए प्रेरित करता है, जहां पर कुछ ऐसा है जो उलझा हुआ है, कुछ वो ऐसी गांठें हैं जो बंधी हुई हैं, जो खुली नहीं है, कुछ अनरिजॉल्व है? गुजारी बात बताइए। जी गुरुजी। So I feel something inside us, the ego, or that we want to be right. Something inside us who feels that nay, you are the right person, you are righteousness. So sometimes it's also my feeling to be right or wrong. Sometimes it could be feeling that I have an image that in my own eyes for myself, and I'm trying to save that image and preserve it. So that is also a part of it. That is what I'm trying to save. So this is what I feel. And is this something pointing towards which is unresolved? It could be, yes. It is also part of the ego, and it is also part of, if I feel no, I am always right, I have to be right no matter what. But everything can be right from different perspective. So, in any situation, you felt the need to speak and to react strongly. Yes, many Okay. situations. Give any example of the situation so that others can also share their Um, their examples. so one of the example can be like if I remember recent examples, if I'm dealing with someone on
given some work manipulative way. So um for example, I was supposed to ship like 10 plans, but I said only okay, 4 are important. But when it comes to negotiating in terms of money or something, so so they'll say no, no, but you said 4 plans, but that is a very manipulative or selective statements from your entire thing. They'll choose and use it against you. So those kind of things, and then you have to say no, I did not mean that, I did not say that. Just a sec. Just a sec. Yeah, so that time you have to also stand by what you said and what you did not said. It is not true, it is true. So that was a recent one. And then sometimes in terms of my family members, if uh, they try to say no, no, this is your feeling, you are going in wrong direction, you are doing it everything wrong. But if you feel no, this is your life, and you also have, even if it is wrong or right, but if you have the right to make choices for your own life, and but they don't agree to it, they feel that they should be driving your life, some close ones. And that is one of the cases when you have to have boundaries or stand by no, this is what I feel is good for me in my life, and something. So those kind of different two scenarios, one with close relationships and one on the business side. But it was a very similar part. It was also manipulation, but in a different way. It was also somebody's trying to control you, and but you can do not want to be controlled. And in the other way, somebody is trying to use your own words and manipulations. So these are one or two situations that can happen. But sometimes you have to answer back, sometimes there is no point, because it will come back again. Even if the person backs out for temporarily, Hmm. that comes back again. But because you cannot change anybody else's behavior, is that is something I learned also my life in the long way. Absolutely not. We cannot change anyone. If you try to convince them by words and by saying, they can try to be a little bit. For a few days they'll try to change, but after 2 3 days you'll see them back to the same behavior, back to attack. Hurting you, attacking you. Now, the reason could be anything. They have their own unresolved things. You have your own unresolved things, and that is when the clash happens. Okay. There are so many comments. I used to It Yeah. used to trigger me a lot before, but now I just start chanting mantra and keep quiet. But that, in actual fact, it triggers them more. So, not responding, they stop saying anything. Yes, it is so true. You cannot change them. So, so you take care of yourself, but by not reacting. When we take things personally, when the other does not meet our expectations, we judge people or label them, or they do not meet our sense of right or wrong, or they touch a part of us that is sensitive, we get triggered. Their conversation is not aligned to our expectation, it's pending resolution in difficult situations. Yes, it is related to the person who's creating the situation. With me, I think it's where I tried so hard to change the situation, but the other person doesn't try to change situation, they're in themselves. I've stopped reacting much, but my body shows symptoms in the form of migraine, pain in the body. Predictable behaviors and repeated responses can trigger. Sometimes, when things don't go our way, we get triggered. Okay. So basically, it shows us that there is a certain type of attachment in the behavior, attachment to be in a certain way, attachment to be treated in a certain manner. And when someone tries to create a trigger, we become insecure because deep down, our ego mind is still seeking validation. And the moment ego feels threatened, the trigger happens.
Because there is a certain image which I have created about me. I am a very big person with a very big title, with so many prefix before my name, with so many degrees, with so many awards, with very big, huge bungalows, cars. You know, a huge photograph comes every day in the newspaper about me. So many things. And that creates a certain attachment. And when I become attached, then I'm living in a bubble. And then I have to maintain that bubble. And the moment I see a threat to that bubble, then I immediately become defensive. So that creates trigger. But the question is, instead of fighting the person in speech, action, what if we became curious about the reaction? I'll tell you a small incident which has happened with me. There was a celebration going on in our university. And in that celebration, a very old gentleman, he's actually a very gentleman, but something happened in that moment, and he said something to me which was not appropriate. But rather than feeling defensive, I became very curious and I felt compassion for that old gentleman. He must be 85 or 86, but he's very active because he was a retired army person and he's naturally uh, very a good soul. But in that moment, something happened, and I was in that celebration with so many people. But naturally, I felt so much compassion towards that gentleman. So I put my hand on his shoulder and asked him, "Is everything okay? What happened to you?" And in that moment, again, he was behaving in a very funny way. So I left that place. And the people around me were thinking, how could he say this and that and whatever? And he shouldn't have said this. Who is he and all that? But then I told the people who were around me, but that I'm not feeling anything actually. Maybe something happened to him. We'll ask some time. And the very next morning, I was having my breakfast. Usually, when I have my breakfast or any meal, so there are 8, 10 people who sit and we do it together. So suddenly, that gentleman came and sat next to me and asked me, "Can I sit here?" I said, "Of course, why not? Please sit." And he was asking me, "What would you like to have?" and all that. So, which is his natural nature. So I asked him, "Is everything okay?" Then he said, "Yes, yes, of course. Why are you asking?" So I asked him because I felt a little difference in your behavior last time. So that's why I'm asking. So he couldn't even recognize that he behaved differently and in such manner that it was not appropriate. So he said maybe I was very tired or something. I don't even remember what did I say. So he was actually asking me what did I say.
So I said, just forget about it and enjoy the breakfast. See how beautiful the breakfast is. And we smiled, we cherished the moment, and it was a great time. And every time, whenever I meet that gentleman, he's a very senior officer in our university. So every time, whenever I meet him, he asks me, would you like to have coffee or how are you? And he even actually was very curious about my hairstyle. He referred me to a salon as well. So that kind of, behavior I experienced with him. And he offered me his car because that time my car was not available. So what I figured out is rather than becoming defensive and immediately pointing the gun towards that person, is this possible to become curious about the reaction? Because when people praise us, when they appreciate us, something in us starts enjoying. But the moment we are well dressed and nobody is noticing, then we feel, let me go and have a look in the mirror. Is everything okay? Why people are not saying today that you are looking beautiful? So somehow we are looking for a validation. But if deep down we know about ourselves, that who we are, then the natural makeup will do everything. Then whatever natural is will happen. Because somehow we have created an insecurity within. And that insecurity wants validation. And it is all a trap of the ego. So we have lost touch with ourselves, and the moment we lose touch with ourselves, then life becomes mundane. Then we are very ordinary. Then we do not know how to live a curious life, a life which is full of mystery and awe. Because the real joy is when you are like a child. So have you seen a child when they fight? After 10 minutes, they are still together. They don't even remember. They will slap each other, and after 10 minutes, they are hugging each other. So, what is that? And we all were like this in the childhood. But something has shifted. The growth begins the moment responsibility shifts from they made me feel this to what inside me is responding. They made me feel bad. They made me look down. To what inside me is responding. This is the most important thing to understand, that am I living a life which is very natural and organic, or am I living a life which is full of images, image of how people should behave when I walk in, how people should behave when I do something good, people should appreciate me, they should always say good things about me. So this kind of image the mind wants to create. So is this possible to become free and unattached
to all the images we have created and to just become nothing. If you try to draw something on the water, what will happen? If you try to draw something on the sand, what will happen? And if you try to draw something on the rock, what will happen? So, what is the inner state? Is it like the rock, like the sand, or like the water? Rocks, maybe few thousand years. Sand, maybe few days or maybe months. Water, you draw something, immediately it will disappear. So, is it possible to become like that? और ये जो आप लोग अभी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर बता रहे थे कि कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा होता है, ऑफिस में ऐसा होता है, एक्चुअली ये सब जगह ही होता है। इवन इन द एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा होता है। मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं, बहुत डायरेक्टर्स हैं, टीम, बहुत सारे लोग, जब मैंने खुद देखा है बहुत बार, जब सपोज कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है या कोई रिकॉग्निशन मिल रहा है, जबकि ऐसी कोई नीड भी नहीं है मेरी कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे या रिकॉग्नाइज करे। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। इवन व्हेन 10 और 20 पीपल आर हियर इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम हैप्पी। और जब सामने 10,000 लोग भी होते हैं तब भी यही बात कर रहा होता हूँ। तो ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई एम नॉट स्पीकिंग। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई एम सपोज टू डू। आई एम सपोज टू शेयर, आई एम सपोज टू just distribute what I have collected through my experiences of life. But when appreciation happens, तो वो जो प्रोफेसर्स हैं, जो उच्च पद पे बैठे हुए जो डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों को एक असहजता लगती है। और मैंने ये क्यूरियोसिटी के माध्यम से जानने की कोशिश करी कि ये समस्या क्या है, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग दिखते तो बहुत अच्छे हैं और हैं भी बहुत अच्छे, और काफी पढ़े लिखे भी हैं, डिग्रीज भी हैं इनके पास, पीएचडीज हैं, और सब डॉक्टर्स हैं, सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे परिवार से आते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है वो मैंने समझना चाहा। तो प्रॉब्लम उनकी ये थी कि उनकी एज 57 58 है या 59 है, जो भी एज है, उनको ये लगता है कि कोई इतना यंग कैसे ऐसा कर सकता है जहां पर इतना ज्यादा रिकॉग्निशन और प्रशंसा हो रही है। तो ये मैंने जब उनकी प्रॉब्लम को समझा, तो मैंने अपनी विजिबिलिटी को बहुत कम कर दिया कि उनको बेचारों को दुख ना हो मेरी प्रेजेंस से। बट प्रॉब्लम वहां पे खत्म नहीं हुई, और ज्यादा बढ़ गई। जैसे मैंने अपनी विजिबिलिटी को और कम किया, और ज्यादा मैं लाइमलाइट में आ गया और विजिबल हो गया, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई का गेम है। आप जितना अवेलेबल हो जाए वर्सेस आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर लें, तो अननोइंगली अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। तो मुझे लगा कि ये तो उनके लिए और ट्रबल की बात हो गई। तो फिर मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं, अब इन बेचारों का और तो कुछ कर नहीं सकते, इनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सो नाउ एवरी डे आई प्रे फॉर देम कि वो किसी तरीके से इस पाथ पे आ जाए। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश भी करी उन लोगों को इस पाथ पर लाने की, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। जब आपका जो चित्त है वो दूषित हो जाता है, व्हेन योर माइंड इज नॉट प्योर, व्हेन यू थिंक नेगेटिव अबाउट अदर्स। ये मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर और बहुत सीनियर ऑफिसर जो है, मैंने उन सबके साथ ये बात करने की कोशिश करी, बट
वो अध्यात्म में रुचि नहीं लेना चाहते, दे डोंट वांट टू डिस्कस स्पिरिचुअलिटी। उन्होंने लाइफ में सब कुछ ले लिया, एक्सपीरियंसेस ले लिए, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें कैसे खड़ी करनी है वो सीख लिया, ड्राइंग करना सीख लिया, पेंटिंग करना सीख लिया, कंस्ट्रक्शन सीख लिया, एमओयूज कैसे साइन करते हैं अदर यूनिवर्सिटीज के साथ वो सीख लिया, लेकिन अपने साथ कैसे रहना ये नहीं सीख पाए। तो जब कोई नहीं चाहता तो उसको आप हेल्प नहीं कर सकते। आप किसी को, कोई प्यासा है तो आप उसकी हेल्प करने के लिए उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ठंडा पानी आ रहा है, आप पी लीजिए। पर अगर वो आप पे क्रोधित हो जाए और गुस्सा हो जाए कि मुझे तो नहीं पीना पानी, अब आप जबरदस्ती तो उसके मुंह में पानी नहीं डाल सकते। उसे दिखा सकते हो कि पीने के बाद इसमें प्यास बुझ जाती है। तो मैंने उनको पी के दिखाया कि भाई मेरी प्यास बुझी तो आपकी भी बुझ सकती है। आई वॉज ऑल्सो लाइक यू, वंस आई वॉज इग्नोरेंट एंड नाउ आई हैव अंडरस्टूड। तो यू आर ऑल्सो, आई डोंट नो इग्नोरेंट और नॉट, बट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। बट वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म जाग जाता है, उनको लगता है कि कोई इतना यंग कैसे कोई हमें बता सकता है। बट एक्सपीरियंसेस का एज से कोई रिलेशन ही नहीं है। नहीं तो जो 70 80 साल 90 साल के जो लोग हैं वो सारे एनलाइटन हो जाते हैं। फिर तो शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, जितने भी लोग हैं फिर तो वो नासमझ कहलाएंगे, फिर वो बुद्धिजीवी कैसे कहलाएंगे। तो उन लोगों पर तरस भी आती है, दया भी आती है, कंपैशन भी होता है, करुणा आती है कि नासमझों को नहीं पता ये बात। तो जब हमारा जो माइंड है वो बहुत प्योर होता है तो हमें दूसरों पर अननोइंगली दया आने लगती है, वो एक कंपैशन आ जाता है, करुणा आ जाती है। हमारे देश में सावित्रीबाई फुले हुई जिन्होंने बहुत बड़ा शिक्षा में काम किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आई, जो फीमेल एजुकेशन पर उन्होंने काम किया। पहला जो स्कूल खोला उन्होंने पूना में, जो जिसमें महिलाएं आती थी, तो जब वो अपने घर से निकलती थी तो उन पर कीचड़ फेंकते थे लोग खड़े होकर। जिन लोगों को इस बारे में मालूम है, पढ़ा है जिन्होंने, वो जानते होंगे। तो वो एक साड़ी अपने साथ लेकर एक्स्ट्रा चलती थी, क्योंकि उनको रोज पता था कि लोग मुझ पर कीचड़ फेंकेंगे। तो वो स्कूल जाके सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करती थी, वो दूसरी साड़ी पहनती थी और फिर बच्चों को पढ़ाती थी। तो दिस इज कॉल्ड कंपैशन। सो व्हेन यू बिकम मोर प्योर, व्हेन यू बिकम very natural, when you are connected with yourself, then automatically compassion arises. Not for the ones who love you, but also for the ones who do not love you, who try to create hurdles for you. और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, जिस वे में भी आप कर सकते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉप ऑल योर अटैचमेंट्स। तो जितनी भी अटैचमेंट है स्वयं के साथ वो ड्रॉप करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी भी बुनियादी क्रांति हुई है इस संसार में, वो उन्हीं लोगों ने की है जो अपने पर्पस से नहीं भटके कभी, जिनको अपना पर्पस हमेशा याद था। मैं काफी लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी इस वजह से कि एक टॉक्सिक कल्चर है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। और ये एक सर्वे भी हुआ था अभी। अभी मैं कॉन्फ्रेंस में था बैंगलोर में, तो वहां पे एक लेडी प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो वहां पे एक सर्वे भी था। तो उसमें था सबसे ज्यादा लोगों ने जो जॉब छोड़ी है वो सैलरी की वजह से नहीं छोड़ी, वो इस वजह से छोड़ी है कि टॉक्सिक कल्चर वहां पर है, इसलिए जॉब छोड़ी। तो उस टॉक्सिक कल्चर में अगर हम कई बार देखते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोगों का भला हो सकता है और हमारा जो पर्पस है उसमें एक सपोर्ट मिल सकता है, तो अगर हम पर्पस ड्रिवन है तो उस टॉक्सिक जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वहां से एक समझ ये पैदा होती है कि जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या अगर कीचड़ है तो क्या हम कमल बनकर यहाँ पर खिल सकते हैं। फिर हम उस दिशा में सोचने लगे। तो ये जब ही संभव है जब हम
बहुत अपने साथ कनेक्टेड हैं, डीप रूटेड हैं, और खुद पर हमने अगर काम किया है, और वही साधना है। साधना, माला जपना, मंदिर जाना, देवी देवताओं की आरती करना, ये शुरुआत हो सकती है, लेकिन इससे भी गहरी साधना ये है कि स्वयं को समझना। क्योंकि मैंने उन लोगों को भी देखा है जो मंदिर जाते हैं, माला करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन लोगों का दिल दुखाते हैं। मैंने उनको भी देखा है। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बीड़ी पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत प्रसन्न है लोग, उनसे बहुत खुश हैं। तो किसी के जो एक्ट है, उसकी जो दिनचर्या है, उसको देखकर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो व्यक्ति किस तरीके का है। क्योंकि बाहर से जो प्रोजेक्ट होता है वो कुछ अलग है, और अंदर से जो वो व्यक्ति का स्वभाव है, दैट इज टोटली डिफरेंट। सो द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड our own complexities, our own triggers. Do we compare ourselves with others? And do we try to put people down? And we always want to become superior. देखिए, फर्स्ट आने में बहुत खुशी मिलती है जब हम फर्स्ट आते हैं, पर दूसरों को भी जब हम आगे बढ़ा करके उनको फर्स्ट ले आते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं, तो उसका भी एक अपना सुख है, उसमें भी एक जॉय है। बिकॉज यू नो कि अगर आप जब तक खड़े रहेंगे वहां पे, कोई दूसरा फर्स्ट नहीं आ पाएगा। वो एक शाहरुख खान की फिल्म भी थी कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो हार के जीतने वाली जो बात है, वो भी बहुत खूबसूरत है। और उस हार में एक्चुअली हार नहीं है, उस हार में जीत है। क्योंकि बुद्धा सेड थ्री थिंग्स यू कैन नेवर हाइड: द सन, द मून एंड द ट्रूथ। तो वो सत्य जो है वो तो प्रकट होगा ही। तो हो सकता है कि वक्त ऐसा आएगा जब आपको समझने वाले लोग इकट्ठे होंगे और वो समझेंगे, पर उसमें एक धैर्य होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एंड दैट इज रियल sadhana. So when next time someone tries to create a trigger, so just take a pause and stop for that moment and see, how am I feeling within when this person is trying to create a trigger. उस क्षण में रुक जाने से आपको समझ आएगा। किसी ने मुझे कुछ कहा और इमिडिएटली अगर मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया, जवाब दे दिया, तो उस मोमेंट पे मैंने बहुत कुछ खो दिया। मेरे पास ऑप्शन था उस क्षण को समझने के लिए कि ये जो घटना हुई ये क्यों हुई। लेकिन जैसे ही मैंने रिएक्ट करा, तो वो रिएक्शन जो है वो मेरा माइंड से आया, और माइंड जो है वो एक पैटर्न बना लेता है कि जैसे आग पे हाथ रखा और एकदम से हाथ हटाया, वो रिफ्लेक्स एक्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे ही जो भी हमारे रिएक्शन है सब रजिस्टर्ड है, ये पैटर्न बने हुए हैं कि कोई मुझे ऐसा बोलेगा दो बोलो तो उसके चार बोलो, कोई छह बोलेगा तो उसको 12 देना है। वो पूरा ट्रांजैक्शन है, वो सब हिसाब किताब में सब लोग माहिर है, तो वो हिसाब किताब हम लोग बहुत अच्छा रख लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन is with you and speaking something which is creating trouble in you, creating complexity, creating disturbance, creating trigger, just take a moment and see what happens, and in which part of my body am I feeling this. Is it in my head? Is it in my heart? My stomach? Am I shivering? Am I becoming red? My ears are becoming hot? Or whatever it is. Is my BP shooting? Many people are taking BP medicine not because they are ill, but because they are constantly on a trigger mode. They are always 104 fever. Not because they have fever, because they are naturally like this.
But if you are constantly on, your nervous system is on survival mode, then you can never be at ease. Then you can never be peaceful. The other person will not come to you when you will become ill. You have to deal it with yourself. आप बीमार होंगे तो वो दूसरा तो व्यक्ति आएगा नहीं. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया. अब उसकी दवाई तो वो देगा नहीं जो ट्रिगर देके गया है. So that is important to ask. All right, now let's take a moment and we will sit in silence. Inhale and exhale. Gently and deeply. Allow your mind to relax. Inhale and exhale gently and deeply. Gently rub your both the palms, put it on your face, and very gentle smile. And you can open your eyes now. Now share this smile with everyone. All right. So with this, we will end our today's satsang. May you always be happy and blessed. Thank you. Namaste.